everyone. I hope you all are doing really great in your lives. I'm here with the part 3 of the video of the chapter resources, and in this we are going to talk about ubiquitous or localized resources. We are going to talk about human-made resources, human resources, and also very important conservation of resources. But before starting with all of these topics, I'm going to give you a bit of revision of the chapter resources, and about specifically we are going to focus on the part that I have taught you in my last video. In that video I talked about types of resources, and the utility of the resource depends upon the 4 factors: the place where it occurs, the cost of processing it, the form in which it occurs, and the efforts required to process a resource. Okay, and then also we talked about types of resources. For example, we talked about the biotic and the abiotic resources. Biotic resources, don't forget, biotic resources talk about the biotic resources are the living resources, living things that can be renewed, that are renewable resources. For example, wild and domestic animals, agricultural crops, and also microorganisms. Coming to abiotic resources, abiotic resources talks about the resources which we get from the non-living environment, for example land, water, air, and they are non-renewable resources. Then also we talked about potential resources, actual or developed resources. Potential resources are the resources जिसके बारे में हमें पता तो होता है, बट उसके लिए प्रॉपर सर्वेस की ज़रूरत होती है, हमें बहुत सारे सर्वे करने की ज़रूरत पड़ती है. वी डोंट हैव अ प्रॉपर रिजर्व एज वी हैव फॉर द एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्स. अ रिसोर्स विच इज़ थॉरली डेवलप्ड इज़ अ डेवलप्ड रिसोर्स, एंड विद द हेल्प ऑफ सर्विस हमें उनके रिजर्व के बारे में, हमारे पास वो कितना है, वो सब हमें चीज़ें उनके रिजर्व्स के बारे में हमें पता होती हैं. Then we also talked about renewable and non-renewable resources. Renewable resources which have the capability to reproduce are renewable. Non-renewable resources जो हमारे पास fixed quantities में है, जैसे for example fossil fuels, ये सब हमारे पास fixed quantity में है, so they are non-renewable resources. And talking about now our new topic is ubiquitous or localized resources. See, हर जगह ना सेम या यूनिफॉर्मली हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, कहीं पे ज़्यादा होते हैं, कहीं पे कम होते हैं. ओके, सो रिसोर्सेज जो कम और ज़्यादा होते हैं आर नोन एज लोकलाइज्ड रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर. ऑस्ट्रेलिया इज़ नोन फॉर गोल्ड माइंस, तो वहाँ पे ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इंडिया. ओके, एंड इफ़ आई टॉक अबाउट यूबिक्विटस रिसोर्सेज, यूबिक्विटस रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हर जगह अवेलेबल होते हैं. जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट एयर, सनलाइट, ये हर जगह है, सो इट इज़ अ यूबिक्विटस रिसोर्स. रिमेंबर, यूबिक्विटस रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट एवरीवेयर. फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी एंड एयर. लोकलाइज रिसोर्सेज जो आपके लोकल एरिया में, आपके कंट्री में मौजूद होते हैं, are known as localized resources. For example, gold and silver are localized resources. So now starting with human-made resources. Let's go by the name human-made resources. Resources made by the humans. See, now what happens is, see, it is very difficult, or we can say resources that are in the crude form, जो अपने एक raw form में होते हैं ना, उनका बहुत एक limited use होता है humans की life में. So therefore, what human beings do with the help of their skills and the technology, and their knowledge, of course, they transform the crude form into a useful product so that humans can satisfy their needs, and that is why those resources are known as human-made resources. Resources that are made by the humans for the useful needs, to satisfy their needs, and are converted, the crude form of the resources are converted into useful products so that human beings can use it, are known as human-made resource. And of course, technology is an example of human-made resource. Talking about human resources, अभी तक हमने बहुत सारे resources के बारे में पढ़ा. अब हम एक बहुत 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 important resource के बारे में पढ़ेंगे, और वो है human beings. हाँ, हम लोग. ओके, सो ह्यूमन बींग्स अपना दिमाग, बुद्धि, विवेक का यूज़ करके किसी भी क्रूड फॉर्म, किसी भी रॉ फॉर्म को ऑफ अ रिसोर्स कन्वर्ट कर सकते हैं यूजफुल प्रोडक्ट में. एंड ह्यूमन बींग्स, मतलब हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि हम जो है किसी भी चीज़ को, किसी भी रिसोर्स को डेवलप कर सकते हैं और एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, राइट. सो
इस वजह से विद द हेल्प ऑफ स्किल्स नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी ह्यूमन रिसोर्स बिकम्स द बिगेस्ट रिसोर्स ऑफ अ कंट्री, बिकॉज एक कंट्री की ग्रोथ डिपेंड करेगी उसके पास कितने शार्प माइंडेड लोग हैं और वो किस हिसाब से अपनी एजुकेशन के थ्रू या अपने स्किल्स और नॉलेज के थ्रू किसी भी चीज़ को या उस कंट्री को प्रोग्रेस की तरफ ले जा सकते हैं। दैट इज़ वाई human resource is the biggest resource and every country should take care of their human resources and their natural resources. Okay, अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। देखो क्या होता था पहले के टाइम पे ना, अगर हम अर्ली टाइम्स और अभी का कंपैरिजन करें, एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं, तो अर्ली टाइम्स में क्या होता था कि हमारी पॉपुलेशन बहुत कम थी, ठीक है। पॉपुलेशन कम थी तो ग्रेजुअली क्या हुआ कि उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कम रिसोर्सेज का यूज़ होता था और मोस्ट ऑफ द पीपल वर एक्चुअली द नीड्स वर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स एंड द एनिमल्स। तो इस वजह से कभी कोई ऐसी नीड सी फील नहीं हुई कि हमें जो है रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए। बट विद अर्ली ग्रोइंग एज एंड टाइम पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ और जैसे ही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ उसी टाइम पे ऑब्वियसली रिसोर्सेज का कंजम्पशन ज़्यादा हुआ, यूसेज ज़्यादा हुआ और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इफ़ यू रिमेंबर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्सेज जो हमारे पास फिक्स्ड क्वांटिटी में, तो एक ये डर सा आया, देयर वाज दिस पीपल गॉट स्कैर्ड इन अ वे कि ये हमारे पास फिक्स्ड क्वांटिटी में ये ख़त्म हो जाएगा, हमारा जितना भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। सो अ लॉट ऑफ अलार्मिंग सिचुएशन टुक प्लेस एंड दैट इज व्हाई इट वाज आस्क्ड कि that people should conserve the resources and use them properly, and when you use the natural resources properly in a good way by taking care of just your need, not your greed, then it was known as conservation of resources. And when you use the natural resources for your today's need and also save it for your future generation, ऐसा तो नहीं है हमारी जनरेशन के बाद अब कोई जनरेशन ही नहीं आने वाली है, ऐसा तो नहीं हम लास्ट जनरेशन तो है नहीं ना, राइट। तो ऐसा तो होगा ही नहीं। तो when you use the natural resources very properly to satisfy your today's need and then you also save it for your future generation, that is known as sustainable development. So I hope the chapter is clear to you. If you have any doubt, please comment down below, and any feedback if you would like to give, it is always welcome. And now I will be meeting you with a new chapter hopefully very soon. Till then, just take care of yourself and lots of love to all of you, and all the best for your exams. So yeah, take care everyone, bye. And yes, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Love you all, bye.